हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्रेस होम्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कि कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वर एट प्ले एंड हाउ दे वर इम्पैक्टिंग द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ इंडिया। हमने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर करी थी, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट मिडिल क्लास एक्सपेंशन विच इज़ गोना टेक प्लेस इन द फ्यूचर, सो वुड बी और अपर मिडिल क्लास जिनका कहते हैं एक्सपेंशन होगा, हाउ दिस विल इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट, एंड वी कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल. If you haven't seen that video, please go to the link in the description and you can see that video. In this video, before we start, I just want to give a small background about myself. Myself Aditya Gupta, and I have an economics background. I have done my economic honors as well as masters in economics from Delhi School of Economics. So in order to give you a better understanding, I myself being a student of economics, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में मैंने काफ़ी वो करा है. आई ऑल्सो वर्कड एट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च वेर आई वॉज प्लेइंग अराउंड विद द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड trying to give the best reports possible. We cover in these videos and all the upcoming videos in future as well. I will be giving a very factual data to everybody who is looking at my video so that you have a better understanding about how the macroeconomic factors and other economic factors are at play and how it will impact the real estate market. So stay tuned for this video and watch till the end. तो इस वाली वीडियो में specifically we will be talking about Gurgaon as a city and how the real estate market is working here, where we will be covering a lot of other things also. So don't miss out and watch till the end. So in this video, we will start with booming luxury real estate market in Gurgaon and how the future looks for it. Today, Gurgaon is buzzing with about 835 ongoing projects, collectively जिसकी valuation कुछ 3 लाख करोड़ रुपए है. These ventures, they span across various sectors, including your housing, hospitality, कमर्शियल स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन. ऑफ द 85, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में पहले बात करें, सो ऑफ द 85 प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, 82% फोकस ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसकी अगर हम बात करें टोटल वैल्यू, सो 40% ऑफ द टोटल वैल्यू इज एक्चुअली अकाउंटेड फॉर बाय दिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. इसमें अगर हम बात करते हैं, द लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट इज लीडिंग द चार्ज विच इज रिप्रेजेंटिंग अराउंड 70% ऑफ ऑल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव. हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन going on, 70% जो उसमें है that is in your luxury segment. Over the past few years, 23 new private projects have been announced, जिसकी वैल्यूएशन कुछ 4 लाख करोड़ रुपए है. Of these 23 projects, 16 are in housing and construction, which is valued at rupees 60,000 crore rupees, with luxury housing continuing to drive the market. As we see that luxury segment is the main anchor in real estate market today in Gurgaon, जो कि lead कर रहा है for all the housing and construction projects. अगर मैं बात करता हूँ public sector investments की, because that is also very important. Private and public is the government investments which take place. तो अगर ये दोनों जब पैरेलली साथ साथ चलते हैं, तभी कहता है कि we can see development taking place. So if we are talk about public sector infrastructure investment, 23 public infrastructure projects are either underway or have been announced with a valuation of 30,000 crore rupees. These projects are set to transform the city's infrastructure landscape, which will have an economic ripple effect, which will be beneficial not just for real estate but overall economy as a whole. अगर मैं बात करूं इन हाउसिंग सेक्टर, सेल्स एंड लॉन्चेस आर गोइंग अप बट इन्वेंट्री इज गोइंग डाउन. तो उसका क्या रीजन है? व्हाट एक्सप्लेन्स दिस कि हाउसिंग सेक्टर में सेल्स भी बढ़ रही है, इन्वेंट्री भी कम हो रही है. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले हियर, एंड जिसमें से हम एक दो फैक्टर्स के बारे में इधर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेविंग्स. सेविंग्स होती है जो हाउस होल्ड अपने पैसे कमाते हैं, जो उनके पास आता है, जिसमें से वो अपना पैसा बचाते हैं. तो व्हेन यू सेव इन फिजिकल एसेट्स, मीनिंग दैट जब भी आप अपने टैंजिबल एसेट, द वंस जो कि आपको दिखता है, कोई भी ऐसा एसेट है, जब आप अपना पैसा उसमें डालते हो, तो दैट इज सेविंग इन फिजिकल एसेट्स. सेविंग्स इन दिस फिजिकल एसेट्स हैव बीन गेनिंग ग्राउंड इन द इकोनॉमी. अगर मैं बात करूं इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का, तो फिजिकल सेविंग्स of the households have grown from 13.2 lakh crores in 2015-16 to about massive 35 lakh crore rupees. Compound annual growth rate of 15%. And physical savings have grown in double digits in the last 7 years. Saving as a percentage, अगर हम देखें as a percentage of nominal GDP, so that also stands at a 7-year high. So during financial year 23, household physical savings was about 70% of the total saving of the households. मतलब कि जितना सेव आपके हाउस होल्ड्स कर रहे थे,
उसमें 70% was in physical assets. So this is one reason why you will see that inventories are going down, because people, your households, the money that they are earning, the money that they are saving, उसमें से 70% पैसा वो physical assets में डाल रहे हैं. Another reason is that banking support बहुत important होता है to get the capital, to get the loan. So when we talk about the scheduled commercial banks and how they are actually supporting the housing sector, so housing and commercial real estate loans have actually grown in double digits. Scheduled commercial bank loans to housing sector grew from about 7.5 lakh crores in financial year 16 to about 23 lakh crores in financial year 24. So which shows a compound annual growth rate of 16%. So not just for housing, but अगर commercial में बात करेंगे तो scheduled commercial bank loans to commercial real estate sector has grown from 1.8 lakh crores in financial year 16 to about 4 lakh crores in financial year 24. So which is a compound annual growth rate of 11%. Now if we talk about the premium home sales as a percentage of total residential sales, that has actually doubled from 16% in 2018 to 33% in 2023. तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, सो ऑल दीज फैक्टर्स बीइंग एट प्ले, बीइंग इट योर फिजिकल savings, the households, the money that they're saving in physical assets, and your scheduled commercial bank being a backbone and also supporting the housing sector. So all of these factors are very important to say that the real estate market of Gurgaon is going to boom in the coming future, and as we can see over the past post-COVID years also, which has always been the trend. So thank you so much. If you felt that this video was informative, you can subscribe to our channel, you can share and like the video, and stay tuned for more such informative videos. Thank you.